Good morning, dear children. Today in EVS, we will do lesson number 22, Patola. And a very, very good morning to all my dear students of Standard 4th. Hope everyone is fine. And I think you all are now waiting for your turn to come to school. My dear children, we are also waiting to welcome you. But till then, we have to study from the videos only. So let's start our work in the environment looking around book. Today we are going to start a new lesson. That is your lesson number 22. Lesson number 22, name of the lesson is Patola. You can see the lovely patterns of the saris, that intricate work, the craftsmanship that you can see on this nice silk sari. So this is the sari which is made in Gujarat. It's world famous all over the world. The saris go from here. People from the foreign countries also come and see those lovely patterns that are drawn on these saris by the craftsmen, skilled craftsmen rather, who take months to make one sari with their hand. It is handmade, it is not made by machines. So it is really a very difficult task to make such a lovely saris with different patterns. As you can see, I'll take it more closer so that you can see the patterns which are so beautiful and intricate patterns on this. So dear children, today we are going to learn about how these Patola saris are made. Who are the people who make these saris? But first of all, you have to write today's date, that is 20 to 2021, and classwork here. And then we'll start our work. This whole lesson is about how to weave this. It is a I think you might have seen many of the people doing different type of work like goldsmith, blacksmith, लोहार है, सुनार है, टेलर है, मेसन है, कारपेंटर है. इन सबको आपके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे. बट जो वीवर्स हैं उनके बारे में शायद आप उतना नहीं जानते हैं जितना और सारे क्राफ्ट्समैन या स्किल्ड वर्कर्स के बारे में जानते हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वीविंग. ये जो कपड़े हम पहनते हैं वो कैसे वीव होते हैं, हाउ इट इज़ वीव्ड बाय इन द हैंडलूम. हैंडलूम इज़ अ टाइप ऑफ मशीन. और लकड़ी के ऊपर जो होता है धागों को चढ़ाया जाता है और फिर उसको वीव किया जाता है, दैट इज़ द हैंडलूम. और वैसे आजकल मशीनों में भी जो फैक्ट्रीज में कपड़े बनते हैं दे आर मेड बाय ऑन मशीन्स. सो मशीन में भी बनते हैं लेकिन जो हैंडमेड होते हैं दे आर कॉल्ड एज द हैंडलूम क्लॉथ. तो ये जो साड़ियाँ हैं ये भी जो है हाथ से ही बनाई जाती हैं और इनको भी बहुत समय लगता है. इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो पैटर्न इसके अंदर डाले जाते हैं इनको अलग से डाई किया जाता है थ्रेड को, और फिर इसके ऊपर डिज़ाइंस बना के फिर इसको ऐसे वीव किया जाता है. तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वीवर्स of the Patola sari. Now only very few are left because these sarees are very costly and very few takers are there. और इस वजह से उनको उनका रोज़गार जो है वो कम हो गया है क्योंकि अब उनको उतना काम नहीं मिलता. बिकॉज एक तो साड़ियाँ कॉस्टली हो गई हैं, लोगों को उतनी, क्योंकि एवरी टाइम जल्दी जल्दी जो पैटर्न चेंज होते हैं वो इस टाइप के पैटर्न्स इन साड़ियों में चेंज नहीं होते. दे फॉलो द ट्रेडिशनल पैटर्न्स. तो लोगों को शायद उतना पसंद नहीं आता. बट आई थिंक दीज आर द बेस्ट थिंग्स दैट वी हैव इन आवर हेरिटेज. जी हमारे लिए एक हेरिटेज है हमारा जिसको हमको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए. नाउ विल स्टार्ट. Moksha and Nirmal live in Salavivada of Patan. Their home is always filled with bundles of bright colored silk threads. Their mother Kokila Ben and father Ashok Bhai and everyone in the family are weavers. The weaving that they do is very beautiful and special. So here they are talking about one family. The name of the children is Moksha and Nirmal. वो एक पाटन के गांव में रहते हैं और उस गांव में उसके साथ कौन रहता है, उसकी मम्मी अशोक भाई और पापा कोकिला बेन रहते हैं. और उनका सारा घर हमेशा बंडल्स ऑफ थ्रेड्स, ब्राइट कलर थ्रेड्स, मतलब एकदम अच्छे ब्राइट कलरफुल सिल्क के थ्रेड से उनका घर पूरा भरा रहता है क्योंकि उनका काम क्या है, वीविंग द साड़ीज़. वो ऐसे सिल्क साड़ीज़ बनाते हैं. दे आर वीवर्स, सो दे आर मेकिंग दीज साड़ीज़. तो उनके घर में हमेशा सिल्क के ब्राइट कलर के थ्रेड्स के बंडल्स दिखाई देते हैं. एंड वॉट दे डू इज़ दे मेक ब्यूटीफुल एंड स्पेशल साड़ीज़. जो है बहुत ही खूबसूरत और एकदम अलग हटके साड़ी वो बनाते हैं. फ्रॉम मेनी सेंचुरीज सलाविया
सलावी फैमिलीज़ आर लिविंग इन द सलावी वाड़ा। बहुत सालों से जो है सलावी फैमिलीज़ जो हैं वो कहाँ रहते हैं, सलावी वाड़ा जो एक पाटन में जगह है वहाँ पर रहती हैं। अब तो ये फैमिलीज़ जो है सलावी है इसलिए वो एरिया का नाम सलावी वाड़ा है। देयर स्पेशल वीविंग वर्क डन बाय देम इज़ नोन एज पटोला। और जो स्पेशल वीविंग वर्क करती हैं ये फैमिलीज़ उसको क्या बोलते हैं, उनको पटोला बोलते हैं। जो पैटर्न जो वो साड़ीज़ पे जो बनाते हैं उस पैटर्न को पटोला बोलते हैं। नाउ देयर पटोला हाउस, नाउ डेज पटोला हाउस हैज़ बीन एस्टैब्लिश टू इन्फॉर्म इंडियन पीपल एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट देयर स्पेशल वीविंग वर्क। अब वहाँ पर जो है एक पटोला हाउस जो है एक्स्टैब्लिश हुआ है, बनाया है, so that people from India within our country and people from outside world also know this beautiful work of weaving. Now dear children, Patan, you might have heard the name of Patan. Patan is very close to Modhera. You might have seen the Modhera Sun Temple, so it is not far from there. Patan is very close to Modhera. It is very heritage city also because it is very famous for the पाटन जैसी जो जो है वो बहुत ही खूबसूरत एक हेरिटेज प्लेस। का मतलब क्या है कि वहाँ पर इतनी पुरानी पुरानी एंशंट चीज़ें हैं, वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल्स आर देयर ओवर देयर। और इट्स हिस्टोरिकली ऑल्सो दिस प्लेस वॉज वेरी फेमस व्हेन इट वॉज रूल्ड बाय द सोलंकी डायनेस्टी। तब वहाँ पर जो रूल करते थे उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनवाई थी। जो एक स्टेपल है रानी की वाव जो है वो आज भी उतना ही फेमस है। एंड वो इतना खूबसूरत और इतना 2-3 मंजिला, आई थिंक 2 or 3 stories आर देयर इन दैट वाव दैट वाज बिल्ट बाय द रानी, मीन्स क्वीन ने वो बिल्ड करवाया था। जो राजा थे वहाँ के उनके याद में वो बिल्ड करवाया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें पाटन में देखने को मिलती हैं जो कि काफ़ी हिस्टोरिक है। और उन्हीं में से एक ब्यूटीफुल चीज़ है वो ये वीविंग ऑफ साड़ी विच इज़ योर पटोला साड़ीज़। तो यहाँ पर जो पटोला हाउस इसीलिए बनाया गया है कि देश विदेश से जब लोग पाटन, बिकॉज पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो कम टू विजिट पाटन, तो पाटन जब देखने आएंगे तो ये जो उनका काम है, उनकी जो पहचान है, पाटन इज नोन बाय द पटोलाज इट सेल, तो वो तो पटोला की जो पहचान है उनकी उसको रिवाइव कर सके और जो आगे उस लेगेसी को आगे लेके जा सके। द क्राफ्ट्समैन who made Rani Ki Vav in Patan, they also had used this design of patola in their stone work. The poets of Gujarat have also discussed about this craft in the folk songs like. So patolas are so famous. The Patan के जो patolas हैं उनके जो designs हैं, उनके जो patterns हैं that they weave in the sarees are so famous that when Rani the queen built a vow or the stepwell in Patan, then in those carvings of the stone was done. Then in those stone carvings also these patola prints were sculpted out in that stone also. And they the patolas became so famous that the Gujarati folk songs also are based on these patola sarees. Many folk songs poet have written to describe these beautiful patola sarees and the women love of the women towards that saree. That the folk song, one of the folk songs is given like this: Chela re Mari Hatu Patano Patoru Monghu Lavjo. This is a famous, very famous Gujarati song. I think you all must have heard also. So ये बहुत ही खूबसूरत सा एक जो है गुजराती फोक सॉन्ग है विच इज़ रिलेटेड, विच इज़ डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ द पाटन एंड द पटोला एंड द ईगरनेस ऑफ अ वुमेन टू गेट दैट। सो ऐसे बहुत सारे फोक सॉन्ग्स जो है इसके ऊपर लिखे गए हैं। मोक्षा एंड निर्मल्स पेरेंट्स लर्न दिस आर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मोक्षा और निर्मल के पेरेंट्स ने पटोला कहाँ से बनाना सीखा? बिकॉज उनके पेरेंट्स दे ऑल्सो यूज टू वीव दिस पटोला साड़ी, सो दे ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम। नाउ Moksha and Nirmal also help their parents after coming back from school and learning this art. अब मोक्षा और निर्मल तो दोनों स्कूल जाते हैं, so after coming from school they also come after coming from school they help their parents and they are also learning this art of making the patola, because now it is very difficult to survive by, so the very few craftsmen have now been there for doing this type of work. Now you can see on this page also
lovely patterns are given here. So beautiful patterns are given here, and this is the handloom weaving, how they do this work. कैसे उसके ऊपर जो है threads को color करते हैं. This is the white thread, then this color thread has been dyed, and how they put it in the grid and then on the weave, और इस तरीके से weave पर रख के वो लोग इसको बनाते हैं. How they make the design. So entire thing is given here. So you can see these jollies. ये जो है वाव के ऊपर जो है जो step well है उसके ऊपर see the patterns have been drawn. This is quite similar to the patterns of these patolas. So you can see it very clearly that this, it means from such a long time these sarees have been famous. So this is how the sarees are made. Process of making patolas of pattern. So this is the entire, all the pics that are given on this page is the entire story of how the patolas are being weaved. You can see these elephants are there, then floral patterns are there, fish is there, bird is there. So many different types of, all the patterns are basically taken out from the nature only. Now moving on to page number 168. From thread to cloth. Now here the story begins with how the patolas are made. What is the main thing that is required for material that is required to make a patola? The thread which are used to weave patolas is made from mulberry silk. Now you know mulberry is a tree. It is a very big tree on which the silkworms are live. It is the only tree on which the silkworms are found. Silkworms और किसी उसमें नहीं रहते पेड़ पे, सिवाय के मलबरी या शहतूत के पेड़ पे ही रहते हैं. और उस पेड़ पे जो सिल्क कुकून्स होते हैं या सिल्कवर्म्स होते हैं, फ्रॉम देयर द सिल्क थ्रेड्स आर डिराइव्ड. उसमें से सिल्क के थ्रेड निकाले जाते हैं, और वो जो होते हैं वो मलबरी सिल्क जो होता है वो वाइट इन कलर होता है. फादर ब्रिंग्स दीज ऑल सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम आउटसाइड. द थ्रेड्स आर ओपनड एंड मेड इनटू ग्रिड लेड आउट ऑन अ क्रिस क्रॉस मैनर. फिर उसके बाद जो थ्रेड्स होते हैं उनको एक ग्रिड पे रख के जैसे रखा जाता है, मतलब एक ऐसे सीधा एक क्रॉस में, एक सीधा एक क्रॉस में, ऐसे इस तरीके से उसके ऊपर रखा जाता है. आफ्टर दैट डिज़ाइन इज़ मेड ऑन दैट. और उसके बाद उसके ऊपर जो है डिज़ाइंस बनाई जाती हैं. जैसे डिज़ाइन होती है अकॉर्डिंगली दे कलर इट. डिज़ाइंड थ्रेड इज टाइड देयर आफ्टर. सो द आफ्टर मेकिंग द डिज़ाइन दे टाई द थ्रेड्स सो दैट डिज़ाइन डज नॉट मूव. मतलब जहाँ जो डिज़ाइन बनाए हैं वो डिज़ाइन वहीं पर है, एंड थ्रेड्स डोंट गेट मिक्सड अप विद द अदर्स, विच इज़ कॉल्ड एज बांधनी वर्क. दिस इज द टाइंग ऑफ थ्रेड आफ्टर मेकिंग द डिज़ाइंस इज कॉल्ड एज द बांधनी वर्क. दिस पार्ट विच हैज़ टू बी डाइड इज केप्ट ओपन. और जिस पार्ट को थ्रेड के जिस पार्ट को कलर करना होता है उसको जो ओपन रखा जाता है, एंड द रिमेनिंग ऑल पार्ट इज टाइड डाउन. And according to the measurement it is dyed and tied up again. So after dyeing it, after putting it in the color, dyeing means putting the color on the white thread के ऊपर जो color चढ़ाना होता है, that is called as dyeing. तो the places where the color has to be put on, or the part that of the thread that has to be dyed, that is kept open, and after dyeing it is again tied out. So उसको tie कर दिया जाता है, and it is done according to the measurement, because particular measurement has to be there, otherwise the designs will not come out as it should come out. तो डिज़ाइन में चेंज हो जाएगा. तो पहले जो डिज़ाइंस ड्रॉ की होती है उसके अकॉर्डिंग जो है इसके ऊपर कलर किया जाता है. This work is hard and time consuming. When the grid is designed and finished dyeing, after that it is put up on a handloom for weaving. जब ये जो drawing of design and then tying and then coloring, it is quite a long process, means time consuming है. It takes a lot of time to do it, because once you draw the design it will take time, because the designs are so intricate, so small very beautiful small designs जो होते हैं इसके अंदर draw किए जाते हैं. तो वो जो designs draw करने के बाद उसको color करना, then after coloring the threads had to be dried up, and then they are put on the handloom for weaving. So this process of drawing the design and coloring takes a lot of time. Hence, after the hard work of 4 to 6 months, beautiful and colorful patolas are prepared. So it takes nearly 3 to 6 months for one patola sari to get prepared. So dear children, you can understand how much of hard work they put into, how much of creativity they put into, the color combinations that are there, the designs that are there. It's really worth watching how these people know. So dear children, you must know that it is a craft that is a part of our hierarchy जो है हमारी जो
आने वाली जनरेशन्स को इस चीज़ को समझना चाहिए कि कितना स्किल है, कितना टैलेंट है हमारे क्राफ्ट्समैन के अंदर। शायद दुनिया में कहीं ऐसा जो टैलेंट है वो नहीं मिलेगा। Is in danger. In the preparation of patola, care and patience are required for the skill of weaving, designing, and dyeing. Dear children, as you have seen that the designs, the color combinations, everything, it is very difficult because everything is done by hand only. So it needs a lot of patience to do it. Means you have to do each and every work very carefully, whether you are making a drawing a design on it, or you are dyeing it, or you are putting it on the loom. Everything has to be done very carefully, and while weaving also you have to take a lot of precaution. So these sarees are so beautiful कि इनके ऊपर जो है बहुत सारे proverbs are also made in the Gujarati. So patola are, it is hard work for many days. Mulberry silk and colors are very costly, so patolas are sold at very high cost. Earlier, there were 700 families connected with this handcraft, but now only 3 families are trying to keep this handicraft alive. Many people have left this occupation now because the silk sarees are sold very costly, because the material that they get is very costly. The things that are is required to make this beautiful sarees is very costly, and it takes a lot of time also. It's so much of hard work that is put in by these skilled craftsmen to make these lovely sarees. So they are sold at very high price, so there are less takers and less buyers for these things. So now earlier there were 700 families who were doing this type of work, but now only there are 3 families are there are left. Out of the 700, only 3 families are left who are now trying to revive or keeping live this tradition or this legacy of the patolas. Mostly the people have left this job and they have started a new occupation. Patolas is not only the pride of Patan, but it is the dignity and pride of Gujarat and India. No doubt about that, it is a dignity and pride of India. Because as I told you that in the world, I think nowhere in the world you will find such beautiful thing handcrafted. Totally handcrafted, from dyeing to designing to weaving. Everything is totally done by hands. Nowhere the machine is used. So it is the total craftsmanship of the skilled workers only. Patola is precious and unique identity of Asian heritage and Indian culture. It is going to be vanished. For that, we have to give a good price of patola head, help the Kasubis, Kaspis, otherwise this precious art will be vanished. As such, now the art is near the extinct only because it is such a precious and unique identity. I think only the ones who have it's a God gifted to these persons that they can do such things. Otherwise, we people are not able to do any of. We can't even think of such beautiful things. So, if we are not going to support them, then definitely this art is going to die in the near future. As such, it is on the verge of the extinction only, but it still we can see few. But after sometimes, if we are not going to support it, it is definitely going to die. So we are not going to see, we will not be able to carry forward this legacy, or we will not be able to pass on this legacy to the next generation, I think, which is our cultural heritage. ये एक heritage जैसी चीज़ है जिसको कि generations we need to pass on, so that they can know that what India is all about, what basically the India is, which is so rich in culture, the heritage that is so rich, we come to know from these things also. And there's a proverb that is related to the patola, that is Padi patola bhat fate pan fite nahi. That means the patola, the colors are so bright and they're so fast colors are there in the patolas, that the proverb was said in Gujarati कि अगर जो पटोला के ऊपर जो डिज़ाइन पड़ती है, चाहे वो साड़ी शायद फट जाए, वो कपड़ा फट जाए, लेकिन उसकी जो डिज़ाइन है या कलर है वो कभी वैनिश नहीं होगा. So that is how fast the colors of these patolas are. Dear children, it's very interesting lesson to know about how the weavers do this work. I hope you all have enjoyed it. Now there's some exercise that is there, but the work, that exercise that is given in the textbook, we are not going to do. We will do all the exercise in the workbook only. So dear children, now we'll start with the workbook part.